Brajajana Ranjana Jamuna Tera Vanachari Jamuna Tera Vanachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Nitai Gariba, Hariba, Hariba, Bal Hariba. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajikacharya Astotha Satat Sisimad Divine Grace ISKCON Pranajaya Srila Abhishek Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Maharaja Ki Jai. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajikacharya Astotha Satat Sisimad Divine Grace
Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Prabhupada Maharaj Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavin Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem se kahao Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Gadadhara Srivasa Gaura Bhakti Ki Jai. Sisi Radha Krishna Gopal Gopinath Syamakunda Radha Kunda Girigavadana Ki Jai. Sabindavan Dham Ki Jai. Mathura Maya Padam Ki Jai. Navadip Dham Ki Jai. Jagannath Dham Ki Jai. Ganga Maya Yamuna Maya Ki Jai. Srimati Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai. Samaveda Bhakti Vina Ki Jai. Nitai God Premanande. All glories to the Sama devotees, all glories to the Sama devotees, all glories to the Sama devotees, all glories to Sisi Gauranga Gauranga. Om Namo Bhagavate. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, welcome to this auspicious morning event. Recalling and reciting the pastimes of Shrivasa Thakura. Sri Chaitanya Caritamrta, Adi Leela, chapter 17, text 36? 37, 38 mentions about Shrivasa. Okay. I think I miscued. I thought it's Srinivas. All right. Text 37. That's not quite here. Text 37 to 38. Ekadina Vipranama Gopala Chapala. Pasandi Prodana Se Dumuka Bucha Bachala. Bhavani Pujara Sabha Samagrilana. Ratre Srivasere Dware Stana Lepana. Ekadina Vipranama Gopala Chapala. Pasandi Pradana Se Dumuka Vachala. Bhavani Pujara Sabha Samagrilana.
Ratri Sivasera Dware Stana Lepana Ekadina Vipadnama Gopala Chapala Pasandi Pradana Se Dumukha Pachala Bhavani Pujara Sabha Samagri Lana Ratre Sivasera Dware Stana Lepana. Okay, it's not there. It's not on the board. It's not there, right? Yeah, okay, someone could try. Anyone else? Any mountains to try? Far away? Okay. All right. Word for word translation and purport by Divine Grace ISKCON Founder Charya Srila A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Ekadina, one day. Vipra, one Brahmana. Nama, named. Gopala Chapala, Gopala Chapala. Pasandi Pradana, the chief of the non-believers. Say, he, Dumuka, ferocious, using strong words. Vachala, talkative. Bhavani Pujara, for worshipping the goddess Bhavani. Sabha, all. Samagri, ingredients, paraphernalia. Lana, taking. Ratri, at night. Shrivasa, Sivasera, of Shrivasa Thakur. Dware, on the door. Stana, the place. Lepana, smearing. One night, while Caitanya was going on in Srivasa Thakur's house, a Brahmana named
Gopal Chapala, the chief of the non-believers, who was talkative and very rough in his speech, placed all the paraphernalia for worshipping the goddess Durga outside Shrivasa Thakura's door. अनुवाद इस प्रकार है। एक दिन जब रात में श्रीवास ठाकुर के घर के भीतर कीर्तन चल रहा था, तब गोपाल चापल नामक एक ब्राह्मण, जो नास्तिकों पाषंडियों का अगुआ था और बहुत बातूनी तथा बोलने में अक्खड़ था, श्रीवास ठाकुर के द्वार के बाहर दुर्गा देवी की पूजन सामग्री रख गया। So, please kindly respond. Repeat. We did that already. One night, while Kirtan was going on in Srivasa Thakur's house, a Brahmana named Gopala Chapala, the chief of the non-believers, who was talkative and very rough in his speech, placed all the paraphernalia for worshipping the goddess Durga outside Srivasa Thakur's door. Purport: this Brahmana Gopala Chapala wanted to defame Srivasa Thakur by proving that he was actually a Shakta or a worshipper of Bhavani, the goddess Durga, but was externally posing as a Vaishnava. In Bengal, there is a perpetual competition between the devotees of goddess Kali and the devotees of Lord Krishna. Generally, Bengalis, especially those who are meat eaters and drunkards, are very much attached to worshipping the goddess Durga, Kali, Sitala, and Chandi. Such devotees, who are known as Shaktas or worshippers of the Shakti Tattva, are always envious of Vaishnavas. Since Srivasa Thakur was a well-known and respected Vaishnava in Navadvip, Gopal Chapala wanted to reduce his prestige by bringing him down to the platform of the Shaktas. Therefore, outside Srivasa Thakur's door, he placed various paraphernalia for worshipping Bhavani, the wife of Lord Shiva, such as red flower, a plantain leaf, a pot of wine, and reddish sandalwood paste. In the morning, when Srivasa Thakur saw all these paraphernalia in front of his door, he called for the respectable gentlemen of the neighborhood and showed them that at night he was worshipping Bhavani. Very sorry, this gentleman called for a sweeper to cleanse the place. To cleanse the place and purify it by sprinkling water and cow dung there. This incident concerning Gopal Chapala is not mentioned in the Caitanya Bhagavat. हिंदी महाराज, हिंदी तात्पर्य हिंदी में। यह ब्राह्मण गोपाल चपल यह सिद्ध करके श्रीवास ठाकुर को बदनाम करना चाहता था कि वे वास्तव में शाक्त हैं, अर्थात भवानी दुर्गा देवी के पूजक हैं, किंतु ऊपर ऊपर से वैष्णव बनते हैं। बंगाल में देवी काली तथा भगवान कृष्ण के भक्तों में सदा से स्पर्धा चलती आई है। सामान्यतया बंगाली, विशेषकर जो मांसाहारी तथा शराबी हैं, वे देवी दुर्गा, काली, शीतला तथा चंडी की पूजा करने में आसक्त रहते हैं। ऐसे भक्तगण जो शाक्त या शक्ति तत्व के पूजक कहलाते हैं, सदैव वैष्णवों से ईर्ष्या करते हैं। क्योंकि श्रीवास ठाकुर नवद्वीप के विख्यात और सम्मानित वैष्णव थे, अतएव गोपाल चापल उन्हें शाक्त सिद्ध करके उनकी प्रतिष्ठा को घटाना चाहता था। इसलिए उसने श्रीवास ठाकुर के दरवाजे पर शिव पत्नी भवानी की पूजा करने की सामग्री, लाल फूल, केले का पत्ता, सुरा का घड़ा,
तथा लाल चंदन का लेप रख दिया। प्रातःकाल जब श्रीवास ठाकुर ने अपने दरवाजे पर यह पूजा सामग्री देखी तो उन्होंने आसपास के भद्र लोगों को बुलाया और दिखलाया कि आज रात मैं भवानी की पूजा कर रहा था। इन लोगों ने खेद प्रकट किया और भंगी को बुलाकर उस स्थान पर पानी छिड़काकर तथा गोबर से लिपाकर उसे शुद्ध कराया। चैतन्य भागवत में गोपाल चपल संबंधी इस घटना का उल्लेख नहीं है। Yena tasmai Shri Gurave Namaha Sacetaya Manovistam Stafetam Jinabhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadati Swa Padantikam Vande Sri Krishna Caitanya Nityananda Sahodata Godadaya Puspavantu Chita Chandatamani Jaya Sri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sivasad Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale, Srimad Bhakti Vedanta Swami Namaste. Saraswati Deve Gauravani Picharine, Nirvisesa Sunyavadi Pasita. Vanchakalpatari Vyacha, Vipassana Vyayevacha, Patitanam Pavana. I think this, the pastimes of, specifically this pastime of Shrivasa Thakur, is very good for anybody who wants to remain a devotee. The pastimes of Shrivasa Thakur, and especially this very pastime of defamation, is very good for anybody who wish to be a devotee for the rest of his life. तो श्रीवास ठाकुर की लीलाएं, विशेष रूप से ये वाली लीलाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है उन भक्तों के लिए जो जीवन भर कृष्ण के भक्त बना रहना चाहते हैं। So we find out, of course, most of you already know, Shrivasa Thakur is a very close associate of Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो आप में से सब लोग जानते होंगे कि श्रीवास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही निजी पार्षद हैं। Is one of the primary associates of Lord Chaitanya, and every night they used to have what we call nocturnal kirtan. Nocturnal means night. In the night they don't sleep. You go to bed, they don't sleep. They're chanting all through the night. तो श्रीवास ठाकुर बहुत ही एक प्रमुख संगीगण थे महाप्रभु की लीला में, और रात्रि में वो विश्राम नहीं करते थे। महाप्रभु के संगीगण महाप्रभु वो रात्रि भर कीर्तन करते थे। And chanting all through the night. Members who are Shaktas, they will be happy? Of course they will not be happy. You are disturbing their sleep. तो वो पूरे रात भर कीर्तन करते थे और वहाँ वो शाक्तगण लोग थे, वो परेशान होते थे और बोलते थे कि तुम हमेशा मेरे को हम रातों की नींद अब तुमने खराब कर दी है हमारी। So one of the Shaktas was bold enough. He conjured up something, created something to defame Shrivasa Thakur. His people were just. If you read Caitanya Caritamrta, some part of this lila, the people of Navadip, they would pray that, all these devotees who are just disturbing and chanting all through the nights, the king should just get them arrested. All their homes, they should just bulldoze them into the Ganga. तो उनमें से कई लोग बहुत परेशान होके और इन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि कैसे इन भक्तों को परेशान किया जाना चाहिए। तो राजा के पास जाते थे और वो शिकायत करते थे कि ये इन्होंने जो है हमारी नींद खराब कर दी थी, आप इनको जाकर सबके सब भक्तों को आप उठा के गंगा नदी में फेंक दो। But these people who are conducting these nocturnal kirtans,
They are not ordinary human beings. Golokera Prema Dan, Harinam Sankirtan. They are people who came from the spiritual world and you want to fight them. तो ये कोई साधारण पुरुष नहीं थे, वो सब गोलोक से आए हुए थे. गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन. तो गोलोक से आए पुरुषों से आप कैसे मुकाबला कर सकते हो? So these nocturnal kirtans we are going on, and the devotees they were in ecstasy, but it was a big anxiety for the neighborhood. It was a big anxiety for the neighborhood, for the neighbors. They felt very disturbed. तो रात भर महाप्रभु उनके संगीगण नृत्य कीर्तन किया करते थे, लेकिन ये पड़ोसियों के लिए बहुत ही चिंता का विषय बन गया. वो बहुत परेशान हो गए इससे. And they wanted to see that these people, they stop these their nocturnal kirtan, these night kirtans. So they find ways to stop Lord Chaitanya's movement. तो वो चाहते थे कि इनका कीर्तन किसी तरह बंद हो जाए, तो नए नए तरीके निकालने लगे किसी तरह महाप्रभु के आंदोलन को रोकने के लिए. But nobody can stop Lord Chaitanya's movement. कोई भी महाप्रभु के आंदोलन को रोक नहीं सकता. So what Gopalachapala did was just ridiculous. It's like a child's play, gross ignorance. तो जो गोपाल चपल ने किया वो काफी मूर्खता भरा था. ये जैसे बच्चा कोई पूरी अज्ञानतावश में कोई कार्य करता है वैसे ही था. But look at what happened. The person who was supposed to be the victim, who was supposed to feel hurt, he didn't feel hurt. He called his neighbors the next morning. He called his neighbors and said, "Hey, come over." I mean, it's like you go to invite your neighbors for a feast, and they come in to see what is going on, and then you come and show them, paraphernalia of droga. See, you people think that I'm anything. I am nothing. This is what I do in the night. This is what I do. Sorry. This is what I do in the night. So all of you see what I'm doing in the night? Some of you think I am a Vaishnava. I'm not. This is what I do in the night. Worship. I worship God. तो ये श्रीवास ठाकुर को गोपाल चपल को अपेक्षा थी कि श्रीवास ठाकुर को इससे कष्ट होगा, पर श्रीवास ठाकुर को कोई भी कष्ट नहीं हुआ. तो वो सुबह आते हैं, उठते हैं और सारे नवद्वीप के आसपास के पड़ोसियों को बुलाते हैं. तो उनको लगता है कि कुछ ब्राह्मण भोज के लिए हमें बुलाया जा रहा है. तो वहाँ आके जब पहुँचता है तो कहते हैं, देखो मैं कैसा हूँ, आप सब लोग मेरे को वैष्णव समझते हो, मैं बिल्कुल भी वैष्णव नहीं हूँ, मैं देवी दुर्गा का उपासक हूँ, रात को मैं भवानी पूजा करता हूँ, ये देखो इन सब चीज़ों को. But you know what? This neighbor that he called over, they identify Srivasa Thakur's exalted position as a Vaishnava. So when the Srivasa showed them that this is what he did last night, this is what he did last night, they just, they were very infuriated. They said, "Who did this?" तो जो पड़ोसी थे वो श्रीवास ठाकुर की उन्नत स्थिति को एक वैष्णव के रूप में समझ गए थे. और जब उन्होंने ये सब चीज़ देखा कि कैसे देवी दुर्गा भवानी की पूजा की सामग्री रखी हुई है, तो उनको बहुत गुस्सा आया कि किसने किया ये कार्य. So, a good lesson for us. You see, our values, by dint of our values, someone may come and try to defame us, someone may make some allegation, and somebody around us who knows our values, who has studied us very critically, will start to defend. What are you saying? You're nonsense. You think he can do that type of stuff? This is the implication of what the neighbors' action. They knew Lord Srivasa's values. They have had the lived experience of his values, and here someone is trying to come and defame him. तो इसमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमारे जो आध्यात्मिक मूल्य हैं वो कैसे जिन आध्यात्मिक मूल्यों पे हम जीवन जीते हैं तो कैसे हम रक्षा करते हैं. तो कोई आपको अपमान करने का प्रयास करता है, कोई आपके ऊपर दोषारोपण करने का प्रयास करता है, लेकिन कुछ लोग जो आपके आध्यात्मिक मूल्यों को जानते हैं
तो वो बता सकते हैं कि आप कैसे इस पे आरोप लगा सकते हो, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता. So the neighbors that he called to come and see the paraphernalia, they knew, come on, he never did this. He just been too overly humble, and they were angry. तो जब उन्होंने दिखाया शिवास ठाकुर ने कि देखो मैं क्या करता हूँ, तो वो बहुत गुस्सा हो गए उससे कि किसने किया ये, क्योंकि शिवास ठाकुर बहुत ही विनम्र थे, बहुत ही प्रामाणिक वैष्णव थे. So they arranged for someone to come and clean up the place. तो उन्होंने किसी को बुलाया और उस जगह को साफ करवाया. But because they knew someone was trying to defame Shrivasa Thakur. तो वो समझ गए कि कोई ना कोई शिवास ठाकुर को बदनाम करना चाहता है. And the whole episode, you read further, you see the whole of this episode, how they got somebody, paid someone to come and clean up the whole place. So they could have just accepted what Shrivasa was telling them. Why? Because they know Srivasa's values. Our values speak louder than words. तो वो हो सकता था शिवास ठाकुर पे शक कर सकते, लेकिन उन्होंने शिवास ठाकुर पे विश्वास किया. क्यों? क्योंकि उनके जो आध्यात्मिक सिद्धांत है वो बहुत ऊंचे थे. तो इसलिए हमारे जो सिद्धांत है, हमारे जो आध्यात्मिक मूल्य हैं, हमारे शब्दों से ज़्यादा ऊंचे बोलते हैं. Because the neighbors understood Srivasa's position, his dedication to Lord Caitanya, his dedication to the community of Vaishnavas. What somebody else trying to do to defame him was of no value to them. That wouldn't change their appreciation for Srivasa Thakur's devotional adventures. तो वो सारे जो लोग थे वो अवगत थे शिवास ठाकुर की स्थिति से और महाप्रभु के आंदोलन के प्रति उनके प्रेम से, और जो वैष्णव समुदाय है उनके प्रति उनकी जो कृतज्ञता है या उनका जो डेडिकेशन है उनसे समर्पित थे. उसके प्रति समर्पण को देख के वो उसको मतलब उनको What is that? I missed. So, this lila is very important to us. When someone accuses us, what do? Do we react or we should proact? Do we react or we should proact? Two things, pro-action and reaction. Response, there are two ways to respond to a situation. Either you are reactive or you are proactive. Srivasa Thakur was in this case very proactive. तो श्रीवास ठाकुर को ये दोषारोपण किया गया, तो उनका जो व्यवहार था वो काफ़ी कह सकते हैं कि प्रोएक्टिव था. और या दो तरह के हमारे जो गतिविधियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया होती है, एक प्रोएक्टिव और रिएक्टिव. Now a devotee does not take vengeance, does not take actions to pay back what someone has done to him or to her. He gives that into the hands of Lord Krishna. तो एक भक्त जो है कभी प्रतिकार नहीं किया करता अपने ऊपर किए गए अन्यायों का, अत्याचारों का, वो सिर्फ वो उसको कृष्ण के ऊपर छोड़ देता है. And if you read this Caitanya Caritamrta, you understand, you get to know what happens to Gopala Chapala afterwards. तो अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ते हो ये प्रसंग, तो इसमें पता लगेगा कि गोपाल चपल के साथ बाद में क्या हुआ. Now to offend a devotee is called Vaishnav or Vaishnavi aparad. किसी भक्त किसी के प्रति जो आप अपराध करते हो तो वैष्णव अपराध कहलाता है किसी भक्त के प्रति, या वैष्णवी अपराध. And it doesn't really matter whether the person is an exalted
exalted personality or just an ordinary devotee. Aparad is aparad, and it creates an impediment on our spiritual progress. तो इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्नत वैष्णव हो या कोई नवागंतुक भक्त हो, अपराध अपराध है, वो अपराध आपकी भक्ति में बाधा डालेगा. And Gopala Chapala suffered the consequences afterwards. Gopala Chapala, the Pasandi, the offender here, he suffered for the consequences of his action. तो ये जो गोपाल चपल के साथ आगे होता है वो परिणाम स्वरूप, अपराध के परिणाम स्वरूप उसके साथ ये जो होता है. Now, one may wonder, but why Shrivasa is using his home as a base for nocturnal kirtans, disturbing the neighborhood? कोई सोच सकता है कि श्रीवास ठाकुर ये रात भर कीर्तन करके पड़ोसियों को परेशान क्यों करते थे. Now try to understand that the main business, the main job of the devotee is kirtan. सबसे मुख्य जो कार्य है भक्त का उसके जीवन में वो है कीर्तन. And the food, before you go to work, you take breakfast. तो आप कार्य से पहले जाते हो तो कुछ नाश्ता लेके जाते हो. The breakfast for the devotee is the japa. तो जो नाश्ता है भक्त का वो है जप. And the job of the devotee is kirtan, 24 hours kirtan. और जो कार्य है भक्त का वो है 24 घंटे सतत कीर्तन भगवान के नाम का. Because that is the main religion in the age of Kali. यही सबसे मुख्य धर्म है कलयुग के काल में. You know, sometimes in our temples, you know, the management organizes 24-hour kirtan or 6-hour kirtan or 12-hour kirtans, and sometimes you see some people, they say, oh, you know, why are they worrying us? Why are they bothering us? You know, with why are they bothering us with, you know, this 24-hour kirtan or 12-hour kirtan or 6 hours kirtan? It is not a botheration. It is a means of purifying ourselves and also purifying the environment. कई बार हमारे मंदिर में कोई मंदिर प्रबंधन है वो 24 घंटे कीर्तन, 12 घंटे कीर्तन है, 6 घंटे कीर्तन का आयोजन करता है. तो कुछ भक्त लोग बोलते हैं कितना क्यों हमें परेशान कर रहे हैं. तो ये परेशानी के लिए नहीं है, ये भक्तों का मुख्य कार्य है भगवान के नामों का कीर्तन, और इसी से आपका शुद्धिकरण होगा. So what was going on in Srivasa's home, this constant 24 hours kirtan, constant nocturnal kirtans, was a means to purify the environment, to dismantle all those sinful energies in the environment and criminal intentions of the inhabitants, especially those who are living near that environment. तो ये जो श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन हो रहा था वो एक वातावरण को शुद्ध करने के लिए था. तो शुद्ध कैसे करना, बाहर के लोगों, बाहर के जो आपराधिक मानसिकताएं हैं और जो दुर्भावनाएं हैं उनसे इस वातावरण को मुक्त करने के लिए. And for people or for someone to be involved in nocturnal kirtans, you must have a taste, otherwise you chant small and then he said, I'm feeling sleepy, I'm going to sleep. तो कीर्तन है, कीर्तन कर कोई फिर अगर ये नहीं करे तो कोई सोच सकता है कि भाई मेरा तो जप हो गया, मैं जा रहा हूँ, फिर सोने जा रहा हूँ मैं. You must at least have a taste for the holy name for you to consistently chant all through the night. तो ये हरिनाम, सतत हरिनाम कीर्तन करने के लिए किया गया. And that Ruchi is one of the stages that we yearn for, so that we can constantly chant the holy names. The Ruchi, the taste, the stage of chanting where we relish in the holy name, is a stage that we are desiring to achieve. तो रुचि का जो स्तर है, जिस स्तर पे हमको हरिनाम लेने में अच्छा लगेगा, वो हमारी एक आकांक्षा है. And once we attain that stage, we want to
we don't want to stop chanting. जो ये स्तर को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग कीर्तन को नहीं रोकना चाहते कभी भी. So we hear the Caitanya, but we hear the Leelas, but sometimes it's also good to, to dissect the Leela and give some scientific explanation about why the devotees do what they are doing and how they do what they are doing. तो कई बार ये हम लोग बताते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से कि हम लोग भक्त लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं. Everything that we do in this movement has a scientific explanation. कुछ भी हम लोग इस आंदोलन में कर रहे हैं उसका एक वैज्ञानिक प्रमाण है या वैज्ञानिक तरीके से उसको समझाया जा सकता है. So let's take the nocturnal kirtans they are performing. कीर्तन यहाँ पे हो रहा है. During the time of Shrivasa, that Gopal Chapala now came to try to defame Shrivasa. तो गोपाल चपल यहाँ पे श्रीवास ठाकुर को आरोप लगाने आ गया, दोषारोपण करने के लिए आते हैं. In the 19th century, there was a research that was conducted in Washington, D.C. There were some spiritualists who came together and embarked on chanting. In the 19th century, 19वीं शताब्दी में there were spiritualists who came together, who came gathered. They came together to conduct kirtan. तो 19वीं शताब्दी में कुछ भक्त लोग इकट्ठे आए कीर्तन करने के लिए. Now, वॉशिंगटन में before they started the project, it was a scientific project, a research. Before they started, they checked with the crime diary of the Columbia district. तो उस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले उन्होंने वहाँ की क्राइम डायरी जो अपराध की जो सारे दस्तावेज होते हैं उसको चेक किया कि कितने अपराध हो रहे हैं वहाँ पे. So the crime rate was recorded, and the period, the number of days, the period that we are doing this chanting, this kirtan, they also checked within that period the crime rate, and they found that the crime rate in the Columbia district, the whole of the district, plummeted. तो जितने समय उन्होंने कीर्तन किया उसके बाद उन्होंने उस अपराध के जो सारी दस्तावेज हैं, जो सारे रिकॉर्ड्स होते हैं उसको चेक किया तो क्राइम रेट्स में अपराध के जो दर है उसमें रुकावट बहुत ही कम हो गए अपराध उस एक जिले में जहाँ पे उन्होंने कीर्तन किया था. The whole world is becoming a police system because of crimes. पूरा विश्व जो है एक पुलिस घर बन गया है अपराधों की वजह से. And I remember a scenario in Chicago, one of the capitals of capital state, capital city of Illinois in America. Prabhupada was in Chicago, and a journalist came to him and asked him, what can your movement do about crime? तो एक बार मुझे याद है कि प्रभुपाद जी एक बार शिकागो में थे. शिकागो अमेरिका का कोई बड़ा राज्य है, वहाँ पे थे. तो एक पत्रकार प्रभुपाद जी से पूछता है कि आपका आंदोलन या अपराधों के लिए क्या कर सकता है. So Prabhupada said, if people take to the chanting, crime will reduce. तो प्रभुपाद ने बोला कि अगर लोग कीर्तन करते हैं, जप करते हैं भगवान के नामों का, तो अपराध की दर जो है कम हो जाएगी. So Shrivasa Thakur and his cohorts and his fellow devotees, they were performing these nocturnal kirtans, although the people in general may not appreciate what they were doing, but they were also helping to perform the most important act of reducing the crime rate in the neighborhood. तो वो श्रीवास ठाकुर उनके संगीगण वो कीर्तन कर रहे थे. हो सकता है कि जो विरोधी लोग हैं वो उनका उतना ज़्यादा सम्मान ना करें या उतना ज़्यादा उनको अच्छी दृष्टि से ना देखें, लेकिन फिर भी श्रीवास ठाकुर और उनके जो संगीगण जो कीर्तन कर रहे थे उससे
उस आस पड़ोस में जितने भी आपराधिक दर है वो कम हो रही थी। But the non-believers, people, Papa mentioned the Papa, that in Bengal, even till today, there is always this friction between the Durga worshippers and the Vaishnavas. The Durga worshippers, they eat meat, they eat all type of stuff, and the Vaishnavas, they don't eat all this stuff, and the Durga worshippers, they don't really take it very lightly. It's like you're proving that you're superior to the other people. We're eating all this junks, and you're not eating it. So you mean that you're superior. So that's a problem. तो बंगाल में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि दोनों में स्पर्धा चली रहती है, शाक्त पुजारियों के बीच में और वैष्णवों के बीच में, क्योंकि शाक्त है लोग हैं वो सब कुछ खाते हैं, मांस मदिरा ये सब खाते हैं, और लेकिन ये वैष्णव है तो ये नहीं खाते हैं। इसका मतलब वो सब श्रेष्ठ हैं, तो इसी से इन बात को ईर्ष्या होती थी कि ये वैष्णव हमसे श्रेष्ठ कैसे हैं। So not only is Shrivasa Thakur pioneering this great project of bringing the devotees together to engage in the Yuga Dharma chanting, they were also indirectly helping to mitigate crime in Navadvip just by their chanting, based on the results of the current scientific experiments. तो श्रीवास ठाकुर वो हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, और उस हरिनाम संकीर्तन से वो नवद्वीप के वहाँ पे जितने भी अपराध है उस अपराध के दर को पूरा घटा रहे थे, क्योंकि प्रामाणिक है आधुनिक वैज्ञानिक शोध के परिणाम स्वरूप। So yes, when we do the japa, it's for our own benefit. But when we come together to chant, like you do your kirtans in the evening or in the morning, you're doing your kirtans in the Mangalati, or you're going out to chant congregationally in the form of Harinam, this is exactly what you're doing. You are helping to mitigate the crime wave in society. तो हम जप कर रहे हैं सुबह, लेकिन साथ में हम लोग मंगला आरती में कीर्तन करते हैं, सुबह कीर्तन करते हैं, संध्या में कीर्तन करते हैं, या बाहर जाते हैं नाम संकीर्तन में, तो हम जितने भी आपराधिक भावनाएं, आपराधिक तरंगे हैं या फिर आपराधिक दर हैं उसको कम कर रहे हैं इस समाज से हम लोग। So next time someone asks you why you are doing the Harinam, and then you say we are purifying the environment, then he asks you what's your proof that you are purifying the environment? What's your proof? तो कोई आपसे अगली बार फिर पूछेगा कि भाई आप क्या कर रहे हो, कि मैं हरिनाम कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो? क्योंकि इससे वातावरण है जो आपराधिक भावनाओं से शुद्ध हो जाएगा। तो इसका क्या प्रमाण है आपके पास? So the scientists have made their proofs, and so it is important because these days people, we meet people who are religious. It's a different thing. But like the type of preaching I do, I meet people who are not religious, okay? Who are not even philosophers. They're management scientists or pure scientists. And for you to say anything for them to agree with you, you have to prove your point scientifically. तो आजकल के युग में विशेष रूप से जैसे मैं प्रचार करता हूँ, तो उसमें आपको अगर कोई भी अपनी बात रखनी है तो उसको पूरे प्रमाण के साथ रखना होगा, तभी आप उनको अपने बात को उनके सामने सिद्ध कर सकते हो। So Shrivasa Thakur and his wonderful associates, we are not only helping themselves relish the holy names, and we are also helping to spread the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and indirectly creating a conducive environment, because crime and conducive environment don't go together. People experience crimes in their neighborhood or in their environment, they are just in anxiety, they want to even run away. तो श्रीवास ठाकुर हम लोग संकीर्तन आंदोलन में हैं, और साथ के साथ परोक्ष रूप से हम लोग वातावरण को भी शुद्ध कर रहे हैं आध्यात्मिक रूप से,
क्यों? क्योंकि और हम अनुकूल बना रहे हैं कृष्ण भक्ति के, क्योंकि प्रतिकूल वातावरण में और कृष्ण भक्ति दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। So the legacy, one of the legacies that Shrivasa Thakur left behind for the Hare Krishna movement is nocturnal kirtan. Are you still performing a nocturnal kirtan? You do it 24 for Kadasi? Well, don't say only on a Kadasi. And that's good enough because people it's a lot of austerity to perform, 24 hours kirtan. Because we are not on that stage of ruchi, so everything is, sadhana is very bitter. Yeah. तो कह रहे हैं कि मतलब एकादशी में हम लोग करते हैं 24 आवर्स कीर्तन, तो अभी हम लोग रुचि के स्तर पे नहीं हैं, तो ये हमें कड़वा लग सकता है। Yeah, but then the example that has been given by the followers of Lord Chaitanya Mahaprabhu, like Shrivasa and his group, the importance of, congregational chanting, coming together to chant, maybe in individual homes or in a temple. And sometimes we should also embark on that 24 hours kirtan. Some communities, they do that. And it helps a number of devotees to refocus their japa, refocus their sadhana. Because you come into that environment, whether you like it or not, you get purified. तो श्रीवास ठाकुर और उसके संगीगण हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, तो हम लोग भी कर सकते हैं 24 घंटे का कीर्तन, और कई समुदाय हैं ऐसे भक्तों के, तो वो करते हैं, और इससे आपको सहायता मिलती है, फोकस, पूरा ध्यान दोबारा लगाने के लिए, एकाग्र होने के लिए कृष्ण भक्ति में, और आपके जप में भी ये सहायता पहुंचाता है। And Lord Chaitanya himself used to come to participate in the nocturnal kirtans. भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस नर्तन और कीर्तन में भाग लेने के लिए रात्रि कीर्तन में आते थे। So today is a very auspicious day for us, because for us, the pure devotees' appearance day is more important than even Krishna Janmashtami, because the devotee is more merciful than the Supreme Lord himself. तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्तों का अवतरण दिवस कृष्ण के अवतरण दिवस से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भक्त कृष्ण से भी ज़्यादा कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं। Are we fasting till 12 o'clock today? No? Anyway, so those who can fast, please you do, and we should be prayerful to Shrivasa Thakur to give us the Namaruchi. तो हम लोग व्रत कर रहे होंगे दोपहर तक, तो जितने भी लोग व्रत कर रहे हैं जो भी हैं, वो प्रार्थना कर सकते हैं श्रीवास ठाकुर से कि हमें भगवान के नाम में रुचि आए। Everything else we are doing is just to help us to come to that platform where we can chant constantly. कुछ भी हम लोग कर रहे हैं तो उसका एक ही लक्ष्य है कि उस स्तर पे आने का जिस स्तर पे हम लोग निर्बाध रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकें। We should not think that some service more important than the japa, and so we engage in the services, but at the same time we don't neglect our chanting. We don't neglect coming together to perform the Yuga Dharma, chanting together. तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई सेवा जप से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप सेवाएं भी करिए, लेकिन साथ में जप भी कीजिए, और जप को आप नकारिए मत, और साथ में आइए भक्तों के संग में हरिनाम कीर्तन में भाग लेने के लिए। So here one of the stories, part of that very story, that Leela, is that you have made Shrivasa Thakur appear to have been worshipping the goddess Bhavani. Simply for this offense, you will have to fall down into hellish life for 10 million beds. For 10 million beds. Just see how Vaishnava Parad is so horrible. For 10, this is not a joke. For 10 million beds. Gopala Chapala has been assured. Gopal Chapala has been assured. तो गोपाल चपल को यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु की तरह पूरी तरह आश्वासन दिया गया था कि आप 10 करोड़ सालों तक नरक में रहोगे और कीड़ों से काटे जाओगे। So
This is Lord Chaitanya himself saying that. We have to be careful about how we deal with the pure devotees. And we don't know who is who amongst us. We may judge somebody that he just came yesterday. तो हमें भी इस घटना से सीखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि हम किसी भक्त के प्रति अपराध न करें. हमें पता नहीं कौन क्या है. वो बाहरी तौर पे हम सोच सकते हैं कि ये तो कल ही आया है. Anyone who is chanting Hare Krishna, we should honor that person in our heart. We should honor that person. जो भी कोई हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहते हैं, जप करना चाहते हैं, वो व्यक्ति सामने वाले भक्त का अपने हृदय से सम्मान करें. Because someone who chanting Hare Krishna, he has come a long way. Krishna said in the Gita, Bhuvunam Janmanamante Jnanavamam Prapadante Vasudeva Sabhamiti Samahatma Sudulabha. क्योंकि कोई जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, वो कई जन्मों बाद बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ. तो कई जन्मों बाद आया है वो भगवान के शरण में. So, you see, the devotional life is also like a sharp razor. हमारी जो भक्ति है वो एक तीखे छुरी के समान है. In the same devotional environment or in the same razor blade, we can use the razor blade to get a clean shave. तो हम ये ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं एक अपना सर मुड़ाने के लिए. But if we are not attentive, if we are inattentive, the same razor blade can lead us to hospitalization. तो अगर वही ब्लेड थोड़ा सा असावधान होकर हम चलाते हैं तो हमें हॉस्पिटल पहुंचा सकता है. So we should honor devotees, we should be respectful, especially those who are chanting. We should be careful how we deal with them. तो हमें सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं. We may not necessarily act like Gopala Chapala trying to defame another devotee, but sometimes, the mind is funny. तो हम ऐसा स्थूल रूप से गोपाल चपल की तरह व्यवहार नहीं करेंगे कि वो सामने वाले भक्त को परेशान करें, उसके ऊपर दोषारोपण करें. लेकिन हमारा मन है ये बहुत ही चंचल तरीके से कार्य करता है. So similar cases like Gopal Chapala happen sometimes in our movement. तो हमारे आंदोलन में भी कई बार गोपाल चपल जैसे उदाहरण देखने को मिलते हैं. Somebody goes to try to defame another person and they completely forgot that you do this and you have to take bet. तो कई लोग एक दोषारोपण करते हैं या बदनाम करने की कोशिश करते हैं और भूल जाते हैं उस समय कि मुझे इसके लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा. Shrivasa Thakura ki jai. Any comments or questions? Yes. Can you give him the mic? Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, thank you for your wonderful class and the subtle things you have told in this lecture. So one thing you told us we have to be not reactive, we have to be proactive. So how to develop that quality and how not to be, and my second question is how not to be revengeful when somebody is hurting us or we feel that he is hurting me. Hindi. हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने अच्छे लेक्चर के लिए और बहुत सूक्ष्म चीज़ें बताने के लिए. मेरे दो क्वेश्चन हैं कि जैसे आपने बताया श्रीवास का कि वो प्रोएक्टिव थे, रिएक्टिव नहीं थे, तो हम कैसे ये गुण अपने अंदर विकसित कर सकते हैं. और दूसरा ये कि हम अपना कैसे रिवेंज बदला लेने का जो है स्वभाव उसको बदल सकते हैं, क्योंकि हमें कई बार ये लगता है कि वो हमारे साथ गलत कर रहा है वो भक्त. Okay. Now, the mind is very difficult to deal with. The false ego, in fact, Bhakti Vasudeva Swami, he mentioned in some of his writings in the Beggar series, a spiritual warrior series, one of them, he said that the false ego is the greatest enemy of the devotee.
तो मन जो है बहुत मुश्किल है उसको नियंत्रित करना। और श्रीपाद भक्ति तीर्थ महाराज अपनी पुस्तकों की श्रेणी जिसका नाम है द स्पिरिचुअल वॉरियर्स, उसमें लिखते हैं कि जो मिथ्या अहंकार है एक भक्त का सबसे बड़ा शत्रु है। So the false ego is the thing that is responsible for most of our troubles, because if someone says something nasty to us, it might be even our own child. It does something nasty and we think we are in authority. We have the right, you know. We have the right to harass that person, to be angry. But no, Krishna said, Tam titiksha swa bharata. तो मिथ्या अहंकार के कारण हो सकता है हमने वास्तविक रूप से कोई गलती की है, लेकिन अपने आप को हम बचाने की कोशिश करते हैं, अपने मिथ्या अहंकार से सामने वाले को हम प्रताड़ित करते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि तांत तितिक्षस्व भारत। To be proactive, we need to practice. I can give you an example of an 8-year-old girl who demonstrated proaction when she was really maltreated by the father. I said, I can give an example of a girl, 8-year-old girl, who demonstrated proaction in the face of temptation. तो मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ प्रोएक्टिव के पक्ष में कि कैसे एक 8 साल की लड़की है वो इस गुण को प्रदर्शित कर रही है। What I mean is that proaction is something we need to practice. First of all, we have to understand that if someone says something nasty to us, we should think, oh, he does not remove one follicle of hair from my body. तो अगर कोई आपको कोई बुरा बोलता भी है तो पहली तो चीज तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि आपके शरीर से वो बाल नहीं उखाड़ रहा है। Second thought is that I am not his body. दूसरी चीज कि मैं शरीर हूं ही नहीं। Third point, we should think, how can I help this person? तीसरा बिंदु हम ये सोच सकते हैं कि मैं कैसे इसकी मदद करूं। Okay, so let me give you an example of what I encountered when I was a young brahmachari. I was a temple president, and then we were building the temple. I was the person in charge of that project. And in that structure, we have also a guest house. And the city was a strategic location where people fly from overseas. That time I was in Africa. People fly from overseas, and that was a major port where people come. And so they come to our temples. We have a guest house. तो महाराज बता रहे हैं अपने निजी जीवन से, जब मैं ब्रह्मचारी था तो एक सेवा मिली थी मेरे को मंदिर निर्माण की, तो वहाँ पे मैं अध्यक्ष था। तो वहाँ पे वो जो मंदिर था वो उस स्थान पे था, चुना गया था वो स्थान कि जहाँ से अब बंदरगाह या जहाज़ों का आवागमन हो तो लोग वहाँ पे आएँ, और स्वाभाविक है कि वो आएंगे तो वहाँ पे मंदिर में भी आएंगे। So I remember one time, one of my senior devotees to me, he came to make some allegation, unfounded allegation, completely false allegation. तो कोई वरिष्ठ भक्त मेरे ऊपर दोषारोपण करने आए और सारे के सारे मिथ्या थे वो। So I used to be a very tough guy in those periods. And if somebody commits a crime, I would not call for any ISKCON. I would just call the police. तो मैं उस समय बहुत कठोर था, तो कोई भी उस समय गलती करता था मैं सीधा पुलिस को बुला लेता था। So, but then when this guy came to commit that type of, it's a crime, because when you falsely accuse someone of a criminal behavior and you don't have any evidence. तो उस समय तो वो किसी पे दोषारोपण करने आ रहे थे, वो मिथ्या दोषारोपण था जिसका आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। So at that time in that country, drug peddling, drug trafficking, aiding and abetting drug trafficking was a felony, a state crime, and you could even go for life jail. उस समय
वो नशीली दवाइयों का, नशीली पदार्थों का आवागमन या उसको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना एक अपराध था. उस अपराध के कारण आपको जेल में भी जाना पड़ सकता. So one senior devotee, senior to me, very much senior to me, he came to me, I was in the office, and he came to me and said, Vasudev, these guests whom you are keeping in your guest houses, some of them are drug pushers. And you know, and just because they're giving you donations for your temple construction, you keep them. तो वो वरिष्ठ भक्त महाराज के ऑफिस में आते हैं, कार्यालय में आते हैं और बोलते हैं कि देखो वासुदेव, ये जो तुमने जो कुछ अतिथि हैं वो गेस्ट हाउस में, अतिथि घर में, तो वो उनमें से कुछ लोग ये नशीली दवाइयों को बेचते हैं या खरीदते हैं और तुम ये जानते हो, लेकिन फिर भी चूंकि ये तुम्हें दान देते हैं मंदिर बनाने में, इसलिए तुमने यहाँ पे इनको रखा हुआ है. You asked about pro-action. Listen. So, I called his name, I said, such and such. I said, you mean that all that you know about Vasudeva is just, the only thing you know about Vasudeva is just drugs? I do worse things than drugs. तो महाराज बता रहे हैं कि कैसे प्रोएक्टिव कैसे हो सकता है. तो मैंने उन व्यक्ति को बोला, उन भक्त को बोला कि आप वासुदेव के बारे में सिर्फ एक ड्रग्स के बारे में ही जानते हो कि वो नशीली पदार्थ हैं के बारे में से उनका संबंध, सिर्फ आप इतना ही जानते हो क्या? I went further to tell him that I even kill people. You don't know only drugs? He was completely confused. He stood there by the door for more than 4 minutes, did not move, because he came to agitate me, to cause some trouble. And here I am, I'm saying, I'm worse than what you're accusing me for. I do worse things than this, I do worse than that. You know, that never happens with anybody. तो महाराज ने बोला कि तुम मेरे पास ये ड्रग्स के बारे में ही जानते हो, मैं तो इससे भी कई घृणित कार्य कर सकता हूँ. तो जैसे उसने वो सुना, वो स्तंभित हो गया, वो 4 मिनट तक हिला भी नहीं हो. So he stood there for a while, then later he just left. तो कुछ देर तक वो खड़े रहे, उसके बाद वो चले गए. But you know, after some times, some weeks or some months have even passed, so I related the story to the vice president, and he was very furious. He asked me, "What did you do, Vasudev?" I said, you know, I told him exactly what I told the guy, and he said, "You are crazy." तो कुछ समय बाद वहाँ के जो उपाध्यक्ष हैं मंदिर के, उनको मैंने बताया ये सब, तो वो तो गुस्सा हो गए. तो फिर उन्होंने पूछा कि वासुदेव तुमने फिर क्या किया? तो मैंने बताया कि मैंने क्या बोला, उनको क्या किया. तो उन्होंने बोला कि वासुदेव तुम तो पूरी तरह पागल हो. But you know what? That accuser, he became my friend. तो हुआ क्या कि वो जो दोषारोपण करने वाला भक्त था, वो मेरा मित्र बन गया. Each time he has problems with the temple management, he will come to meet me for advice. तो कुछ भी मंदिर प्रबंधन से उनको समस्या होती तो मेरे पास आते थे वो सलाह के लिए. Even when I left that project, when I left the country, he was still my friend. तो मैंने जब वो देश छोड़ दिया, तो फिर भी वो मेरे मित्र ही थे. Another example of pro-action, this girl in Florida, in Laguna Beach in America, the father confessed to me, 8 years old girl. The father came back from work one day and lashed out all type of abuses on this girl. तो ये फ्लोरिडा की बात है, लगुना बीच में. तो एक पिता अपने आप मतलब कन्फेशन करते हैं या बोलते हैं, अपने हृदय की बात खोलते हैं कि मैंने 8 साल की मेरी पुत्री है, उसको मैं गया और बहुत सारे भद्दे शब्दों से उसको मैंने गालियां दी या उसको प्रताड़ित किया. Laguna Beach is in California, near Los Angeles area there. So when he told me about what he did to the daughter, I was very much touched.
But then, the girl did not say anything. Some days have passed. Her temper has come down. The father has already forgotten what he did to the girl. They were happily eating together. And the girl said, Papa, you know, the other day you came back from work and you started raining all type of abuses on me. Did you have any fight with somebody in the office that day? तो वो कुछ दिनों के बाद वो वही बता रहे हैं उस घटना को कि वो कुछ दिनों के बाद वो सब कुछ नॉर्मल हो जाता, वही भूल जाते हैं उन्होंने अपनी पुत्री को गाली दी थी। तो बैठते हैं एक जगह पे, तो फिर उनकी पुत्री पूछती है, पिताजी आपको याद है आप कुछ दिनों पहले आए थे और आपने बहुत गालियां दी थी मेरे को, तो क्या उस दिन आपका ऑफिस में किसी से झगड़ा हुआ था क्या? So imagine somebody hurt you so much. He didn't say anything. Nothing. Some days have already passed. And you brought up the issue. He asking in a loving, friendly way for explanation. तो आपको कोई कष्ट पहुंचाता है, कोई पीड़ा देता है, लेकिन आप कुछ नहीं कहते हो, और कुछ समय पश्चात आप बहुत ही प्रेम पूर्वक तरीके से उस मुद्दे को आप भी लाते हो उनके सामने. So it is not that someone will not hurt us. Someone will poke us. Someone will hurt us. तो ऐसा नहीं है कि कोई हमें कष्ट नहीं पहुंचाए, कोई हमें छेड़ेगा, कोई हमें चोटी काटेगा, कोई कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही. But we need to practice. We need practice is the watchword. We need to practice how to respond in the face of temptations, to how to respond proactively. तो यह कोई हमें बोलेगा ही, तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा कैसे प्रलोभन जब हो हमारे सामने, तो कैसे उसको प्रोएक्टिव तरीके से उसको आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. This is exactly what Shrivasa did. He didn't defend himself. He said, this is what I... तो यही श्रीवास ठाकुर ने किया, वो अपने आप को उन्होंने बचाव नहीं किया अपना. Yeah. Proaction is something we have to practice. इसको हमें अभ्यास करना पड़ेगा, प्रोएक्टिवनेस का. And in the last, yes. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, you told that one who is chanting Hare Krishna Mahamantra, he is a Mahatma as confirmed by Lord Krishna in the verse you told. But I want to understand that whether one who is has started chanting, he or she is a Mahatma, or one who understands that Vasudeva Sarvamiti, that Krishna is all in all and he is a Mahatma, or both the Mahatmas are on the same level, one who has just started practicing Krishna consciousness and one who is really a Mahatma, so both are same, or how to? Yeah, that. Okay, translate. Hindi. महाराज आपने बताया कि जो कृष्ण भावनावृत्ति में हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करता है या उसका अभ्यास शुरू करता है तो वो एक महात्मा है, और इस श्लोक में बताया कि जो वासुदेव को ही सब कुछ समझता है, सभी कारणों का कारण, वो महात्मा है. तो दोनों महात्मा एक ही धरातल पर हैं या कि थोड़ा कैसे समझना चाहिए? हरे कृष्ण. Now, in that very text, Lord Krishna basically mentioned that out of thousands amongst men, one may endeavor for perfection. And out of those who endeavor for perfection, hardly one knows him in truth. The person, that real soul who knows Krishna in truth, who is giving his life to Krishna and Krishna only. That is the definition of Mahatma in that text. But we also find that Krishna mentions that if someone, say for instance, a devotee may flounder, may have, may experience some challenges, still we should see him or her as saintly. If he sticks or she sticks
to the path of bhakti. Why? Because the path of bhakti is very purifying. And in Words of Prabhupada, he said, very quickly, he will or she will rectify themselves. तो उस श्लोक में जो बताते हैं कि कई जन्मों बाद हजारों में से कोई एक व्यक्ति आता है भगवान के पास, और उसमें से भी कई हजारों में से कोई एक व्यक्ति भगवान को तथ्य वास्तविक रूप से समझ पाता है। तो ये है महात्मा का परिभाषा। लेकिन दूसरी तरफ भगवान ये भी बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है, हो सकता है वो कुछ कारणों से उसकी में भक्ति में रुकावटें आ रही है, लेकिन अगर वो भक्ति के पथ पे टिका हुआ है तो उसको साधु मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति जो है उसको उस रुकावट से उसको बाहर निकाल लेगी। So, let's ask him. Okay. All right, I think that we cannot join this meeting now. Go, please. What do you think? We should go join the meeting now. It's a working day. Some people will be going to work and all this stuff, isn't it? There is fasting till noon. What? It's not a working day for people? Working day. All right. Shrivasa Thakur ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande. Bhakti Vasudeva Swami Maharaja ki jai. We are grateful much for this wonderful association, this very auspicious day. Small temple, we are celebrating Shrivasa Thakur appearance, and we are very, very fortunate that Maharaj stays in Mayapur and he stays in Shivasangan. He goes to Shivasangan obviously. So Maharaj came here and blessed us with his very kind words. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada की जय। तो 10:30 बजे से अभिषेक रहेगा, तो आप सब प्लीज बने रहिए कीर्तन में। महाराज भी अभिषेक में रहेंगे। हरे कृष्णा। Is there any
Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare